तो आपने आपके इंश्योरेंस जर्नी में अभी तक के कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस आपके कस्टमर के साथ में या किसी के भी साथ में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आज आप हमारे साथ शेयर कीजिए जो अपकमिंग इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए यूजफुल हो। जनरली क्या होता मैडम, पार्टी डजंट गिव सो मच टाइम टू द फाइनेंशियल प्लानर. They are busy in their own affairs and have least time for their financial planning. So generally, whatever time is available, we have to complete the formalities of insurance in that particular time given to us. The problem is that actually they have least priority for their own financial planning. If we are given some reference of a party, then generally think that they are taking a policy for agent, not for themselves. So minimum policy they will try to purchase from the agent, not as per their requirements. So they want to fulfill the obligation of somebody else and will not be as per their requirements. जितना इम्पोर्टेंस उनको देना चाहिए, जितना टाइम उनको देना चाहिए प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, उतना टाइम वो लोग उसको उतना priority दे. Their last priority is to take insurance, not first priority. So they are not giving the time required for the correct financial planning. So whatever agent knows, he will pitch one or two proposals, whatever he knows, not as per their requirements. So it will not suit to their requirement. So the lapsation will be more because of all these problems. ओके, तो ऐसा कोई एक पार्टी जिनके साथ में आपका ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था एंड फिर बाद में आपको ऐसे लगता है कि उनका लॉस हो गया इस वजह से? अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल ही है मेरे पास कि फादर का वेट बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल पॉलिसी वो लेने गए तो उनको एक्स्ट्रा लगेगा, या तो एक्स्ट्रा लगेगा या फिर मिलेगा भी नहीं. एक्चुअली ही इज हैविंग 120 kg weight, so he will have to pay health extra, which party is not ready. Then I have come with some alternate for this party. Now I am ready to give him, but now they are postponing like anything for last 1 year. So this happens in the market actually. This whenever they require, also they will postpone. Last time he is having only 10 lakhs insurance till now. Jeevan Anand, that extra 10 lakh coverage will be there. After maturity is continuing with them. So still there. Today also I had talked with him, his son. Then he told that this season we will try actually before March. We'll try to finish. और कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिससे कस्टमर ने बहुत कुछ फेस किया या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जो एक्चुअल में लोगों को उससे सीख लेना चाहिए, ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर कीजिए. एक one of my friend is a chartered accountant. I have gone to him for some capital gains purposes. At that time also, he has taken some insurance. 2-3 visits I have made with them. So at all visits, he has taken some insurance or other. So now he has died of sudden death due to accident. Now his age is just 40 years age. So now his family will get huge amount because of correct financial planning at the right time. Otherwise, this incident can happen at any time actually. All of a sudden, in night, I think lift was open or something. That accident took place. No, so now because of the insurance, his family will be protected. ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अच्छी हाइट थी, अच्छी पर्सनालिटी थी इनकी. तो पहली पॉलिसी 5 लाख की जीवन श्री दिया था, लेकिन 3rd ईयर में ही पॉलिसी लेने के बाद इन्होंने और एक पॉलिसी लेना चाहा जो कि 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस. उसका प्रीमियम भी उन्होंने भर दिया था, पर दिवाली आने के कारण वो लोग पोस्टपोन करते गए 2 महीने निकल गए उसमें मेडिकल के लिए. तो मैं एक दिन उनके घर पहुंच गया. एक्चुअली क्यों डिले हो रहा, क्या हो रहा मालूम करेंगे एक्चुअली बोल के पहुंच गया था. तो मालूम हुआ उनका एकदम ही वाज कमिंग फ्रॉम बाथरूम, तो एंटायर बॉडी इज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग एट दैट मोमेंट. So I thought that now it is not possible to take the medical. So if 25 lakhs the premium paid also has gone, and he is not able to get that insurance amount. Only that earlier policy of 5 lakhs he could get his family
after 3 years of the payment actually. Premium was only 25,000 rupees. So he paid 75,000. He got 5,75,000 of this policy. ये 2004 की बात है. 2001 में पहली पॉलिसी दिया था. सेकंड पॉलिसी 2004 में देने के लिए उन पेमेंट भी कर दिए थे. But only because of medicals, the formalities could not be done. And in the meantime, he died actually because of white jaundice. So this claim also was little bit delayed, and he got the insurance amount after 1 year from central office. और जनरली लोगों के माइंड में एक ही चीज रहता कि इंश्योरेंस है सो ओनली इट वर्क्स ओनली आफ्टर डेथ. जनरली पार्टीज डजंट थिंक दैट इट will be also useful during their lifetime. Savings they are making, Okay. it will be used for themselves during their lifetime. And so it serves both purpose, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी. बट जीने के साथ भी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते वो लोग. जीने के बाद ही सबको मालूम है कि इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है वो. It was a nice conversation, sir. Thank you so much for joining us. थैंक यू वेरी मच मैडम. DITV चैनल पर आपका स्वागत है. DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.